Hello and welcome to my YouTube channel, Life of Sciences. Today, I'm going to explain you another important topic of class 12, chapter 12 of NCERT, that is gene therapy. So let us start the topic. Here, let us see the gene therapy. This is the topic of today. What is the gene therapy? So here you can see that gene therapy is a collection of methods. There are many methods which are involved in treating a faulty gene or replacing a non-functional gene. So these methods we are going to study after this page. So here you can see gene therapy is a collection of methods that allows correction of a faulty gene, mutated gene, non-functional gene that has been diagnosed in a child or in early embryonic stage. So here genes are inserted. The functional gene is to be inserted in the person's cells or tissues just to treat a particular disease. Now here, correction of a genetic defect involves what, as I said, delivery or introduction of normal gene, functional gene into the individuals or in embryonic stage to take over the function of, non-functional gene, or just to compensate the non-functional gene with functional gene so that the particular protein or the particular chemical can be synthesized in the body of the patient. Now let us see. Next, what is an example of first clinical gene therapy? So here we can see the first clinical gene therapy was given in 1990 to a 4-year-old girl child, Ashanti D. Silva, with adenosine deaminase deficiency. So here the full form of ADA is adenosine deaminase, and deficiency of this enzyme resulted in what is called SCID. So we will discuss SCID after this page. So let us see what is ADA enzyme. ADA, as I said, is adenosine deaminase enzyme, which is very crucial, very important for the immune system to function. This is the enzyme which makes our lymphocytes to differentiate into B cells, T cells, natural killer cells, so that they can function. But because deficiency of ADA enzyme, these immune cells could not get over their function. It could not take over their function, you can say. So the function of ADA enzyme is to eliminate the toxic chemicals which are generated due to breaking down of DNA. What are the toxic chemicals produced when DNA is broken down? These are deoxyadenosine, deoxyadenosine triphosphate. These are the toxic chemicals, and these toxic chemicals are going to be removed by ADA enzyme, because ADA enzyme converts toxic deoxyadenosine into non-toxic molecule, that is deoxyadenosine. Now, come to the next page. Here you can see, students, where is ADA gene located? What kind of mutation resulted in the disorder? In ADA enzyme deficiency, you can say, or SCID disorder. So here, as I said, ADA enzyme is encoded by a gene that we call ADA gene. So ADA gene is responsible, or you can say ADA gene codes for an enzyme, that is what is ADA enzyme. And this enzyme is very crucial, as I said, to make our immune system function. And the gene for the enzyme is located on chromosome number 20. ADA enzyme deficiency resulted in a disorder in a child that we call SCID. Here you can see severe combined immunodeficiency syndrome. Syndrome is culmination of many symptoms, culmination of many diseases, so many symptoms can be seen in a child. And here the deficiency of immunity resulting,
specifically the acquired immunity. So here severe combined. Combined means neither T cells are going to be differentiated nor the B cells. So here severe deficiency of all the acquired immune cells resulted in the child. So a child could not be able to survive due to lack of these cells. Now this is due to SCID, as I said, is due to accumulation of toxic deoxyadenosine and toxic adenosine triphosphate, right, that we have done right now. These toxic chemicals are removed by the enzyme ADA. But because deficiency of this enzyme in child resulting in accumulation of these toxic chemicals and resulting in SCID. Because these chemicals are harmful for lymphocytes. Lymphocytes are there in the bone marrow, but they could not differentiate into T cells and B cells. And because of this, there is a deficiency of both the kinds of immune cells. So a CID patient does not have functional T lymphocytes, B lymphocytes, even natural killer cells. So the patient could not be provided with immune responses against various pathogens. So in this way, it is fatal for the patient. Now let us see the next point. What kind of mutation resulted in disorder? Very important. The disorder is caused due to deletion of the gene for adenosine deaminase. Here the gene gets mutated due to deletion mutation. And you know the deletion mutation that we did in genetics? Now here we have another point. It is an autosomal recessive monogenic disorder. Monogenic means only one gene is responsible with two alleles. And autosomal recessive means both the alleles of a gene should be recessive to have this disorder. And it is autosomal. It is present on chromosome number 20, as I said. So it is autosomal recessive monogenic disorder of purine metabolism. As we know, adenosine is a purine, and here the metabolism of purine gets disturbed, or disorder of purine metabolism resulted, where a girl child parents might be carrier of the disorder. The child got the disease because the parents of that child might have genotype in heterozygous condition. Here you can see, let us say, this is one child. Here you can see, this is the parent, mother, let us say, of the child. And here is the genotype of father. Let us say these are the parents. So this disorder has a genetic basis, you can see. And you know that these are the gametes. Here we know that law of segregation resulted. Allele pair of a gene separate and segregate during gamete formation, and paired condition is restored after fertilization. So here you can see, let us see, this is the Punnett square. Let's put the gametes over here. These are parent, one parent gametes. Let us say these are eggs. And here let us see another parent gametes. These are sperms. Let them fuse together. Here we have this one and this one. Now, here you can see this is homozygous dominant. Now, the next one you can see this one is heterozygous dominant. Here the heterozygous dominant, but here you can see autosomal recessive disorder. So you can see this is the case of a child resulting in ADA deficiency. Because as I said, the disorder is because of autosomal recessive monogenic disorder. And that too because of deletion mutation. Now, from both the parents, the child gets the recessive gene. So 25% probability is there the child may get the disorder if the parents are heterozygous for the disorder or the gene, you can say. And here you can see
25% would be homozygous, and 50% would be carrier of the disorder. 50% would be carrier of the disorder. So this is the genetic basis of SCID, or you can say ADA deficiency. Now come to next. Here you can see how can the disorder be cured. So there are two methods. One is conventional method, another is gene therapy. So we are going to focus on gene therapy because we are studying the topic gene therapy. But let us see in few points this conventional methods. So bone marrow transplantation is one of the conventional methods in which healthy blood forming stem cells are introduced or infused to the replaced diseased bone marrow. If bone marrow is diseased, faulty, non-functional, so it should be replaced by healthy blood forming stem cells. But this is not a permanent cure because these stem cells are used up by the person. Now, and these stem cells are not immortal, they are mortal. Now, next is enzyme replacement theory. I mean to say enzyme replacement therapy, in which functional ADA is given to the patient by injection. Here by injection, the enzyme is to be given in the bloodstream. But again, this is not a permanent cure. Now, gene therapy, let us see what are the steps to be taken in gene therapy. So here, steps to be taken. Number one, very first point, lymphocytes from the blood of the patient are grown. First of all, lymphocytes from the blood of patient is taken and grown in a culture outside the body in a petri dish. Second, a normal and functional ADA gene is introduced in disarmed retroviruses. You know, retroviruses are harmful to us. So first of all, retroviruses is to be disarmed. The harmful genes to be removed before introducing our functional ADA gene in the retrovirus. So retroviruses should be disarmed. The harmful retrovirus genes which are harmful to us, which are harmful to human cells, human body, are to be removed. Or they may get silenced. They remain inactive. So this is one of the methods. Here, disarmed retrovirus with functional ADA gene act as a vector. So the role of retrovirus is just a vector to introduce the functional gene from healthy person to the person who has mutated gene. Now, retrovirus is allowed to infect patients' lymphocytes in vitro, in a culture medium, outside the body, in a petri dish. So retroviruses, what retroviruses? The viruses that have your desired gene, the functional ADA gene, is allowed to infect in the lymphocyte, where the lymphocytes have non-functional mutated ADA gene. Now, following the reverse of central dogma, complementary DNA, and this complementary DNA has ADA gene, is obtained, is produced, and this ADA gene is going to incorporated in the genome of the culture lymphocyte. Now, the lymphocytes become genetically engineered. How come? Because of introduction of ADA gene by retroviruses. And these genetically engineered lymphocytes can be cloned for further use. Some of them can be introduced into the patient's body. Now come to next. Here you can see the steps of gene therapy. This is the diagrammatic representation. Now you can see here, this is the patient of SCID with ADA deficiency. Before treatment, the toxic level of adenosine plus deoxyadenosine triphosphate would be very high. So lymphocytes could not mature, they could not differentiate because of these chemicals which get accumulated in the patient's body. But after treatment, there is a decreased level of toxic because ADA gene is going to neutralize
going to convert toxic chemical into non-toxic so that the child gets the immunity and child could survive. Here you can see from the patient's body, lymphocytes are taken out in the petri dishes. Here you can see this is the petri dish where the lymphocytes are cultured. Now this is a virus, which is a retrovirus. It is to be disarmed. Disarmed means its harmful gene is to be removed, or harmful gene may become silent. They get silent with ADA gene. So here this is a disarmed retrovirus, and here the functional ADA gene is to be introduced. Before introducing ADA gene, the virus should be made disarmed, or its harmful gene is to be removed. Now this retrovirus, which is now act as a vector, is allowed to infect lymphocytes. As we know, retroviruses can infect human cells. So the infection quality would be retained, but the harmful gene should be removed. And when this retrovirus carrying the functional ADA gene infects your lymphocytes, so the ADA gene can be taken by your lymphocytes. How? We know the reverse of central dogma. We know how RNA of disarmed retrovirus with ADA gene enters into lymphocytes and follows reverse of central dogma. You know that how viruses enter into the lymphocyte. They enter into the cells by introducing their genetic material. And here retroviruses have RNA as a genetic material. So RNA is, RNA enters into the lymphocytes. And just after entry of RNA into lymphocytes, retrovirus going to, replicate via reverse of central dogma. How come? RNA is going to convert into complementary DNA by the help of reverse transcriptase. And this complementary DNA, or you can say copy DNA, has your desired gene. What is the gene? ADA gene. Now this ADA gene is going to incorporate, is going to integrate, is going to mingle into the genome of cultured lymphocytes. In this way, cultured lymphocytes have your desired gene, ADA gene. These are the lymphocytes. These two are the lymphocytes which have your functional ADA gene. They can be selected by the help of marker, and now you can allow these lymphocytes to multiply, to make the clones of the lymphocytes. And these are actually genetically engineered lymphocytes. Why? Because they have functional ADA gene. Now these genetically lymphocytes, can be returned back to the patient. So that patient's body may have ADA gene, the functional ADA gene, and this ADA enzyme is going to remove the toxic level of adenosine and deoxyadenosine triphosphate. So in this way, the patient can be cured. Now let us see the next slide. Is this therapy a permanent cure? When it should be a permanent cure? We know that lymphocytes are not immortal. They are mortal. They are not immortal. They are used up by the patient. They die. Even genetically engineered lymphocyte that we introduce from outside, they also used up by the patient. So periodic infusion of such genetically engineered lymphocytes is required. So it is not a permanent cure. But if the same gene is introduced in the embryonic cell, if we get to know that the defect is in the child, is going to be introduced in the child, and if the disease is diagnosed in the embryonic stage or in the gametic stage, and at that stage, if we introduce the ADA gene, then yes, it is a permanent cure. Because in early embryonic stage, all cells act as stem cells. They multiply, and when they multiply, each and every cell get the
desired gene, the functional gene. So this is what is a permanent cure. But because child has been born, it is of 4 years of age. So no, it is not a permanent cure, because to introduce the desired gene in each and every cell is not possible. And here we know that lymphocytes are not immortal, they are immortal. They, they are mortal, they are not immortal. They die, they used up by the patient. So every time after a particular period, can say introduction of genetically engineered lymphocytes is required. So it is not a permanent cure. It is a permanent cure only when it is to be introduced in early embryonic stage or gametic stage. Now, students, let me explain the same topic in Hindi so that you can get the topic in more detail, because this is request from some of the students that you also explain the topic in Hindi. So students, आज हम पढ़ेंगे जीन थेरेपी. जीन थेरेपी क्या है? जीन थेरेपी कलेक्शन ऑफ मेथड्स हैं जिसमें हम कोई भी ऐसी जीन जिसमें म्यूटेशन हो गया हो, जो कि नॉन फंक्शनल हो, फंक्शन ना कर रही हो, उसे हम ठीक कर सकते हैं. लेकिन हमें वो पता चल गई है बीमारी या तो चाइल्डहुड स्टेज में या एम्ब्रियोनिक स्टेज. अगर चाइल्डहुड बचपन में हमें अगर ये बात पता चली है और हम जीन थेरेपी करने चलेंगे तो वो परमानेंट क्योर नहीं होगा. क्यों? क्योंकि हर सेल में जीन पहुंचाना आसान काम नहीं है. लेकिन अगर यही बीमारी हमें जल्दी पता चल जाए, एम्ब्रियोनिक स्टेज में पता चल जाए, पेरेंट्स के जीनोटाइप से हम स्टडी करके पता कर लें कि नेक्स्ट जनरेशन में जो है जीन डिफेक्ट होने वाला है और 100% चांसेस हैं, तो हम उनके गैमेटिक सेल्स में करेक्शन कर सकते हैं जीन्स में या एम्ब्रियोनिक स्टेज में. यहाँ पे हम करते क्या है? यहाँ हम जीन्स में जीन्स को, करेक्ट जीन को, फंक्शनल जीन को पेशेंट्स के सेल में या उसके टिश्यूज में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिससे कि जो फंक्शन वो नहीं कर रही थी वो फंक्शन करने लगे और एक बीमारी ठीक हो जाए. तो इसमें हम जो नॉन फंक्शनल जीन है उसकी जगह पर एक फंक्शनल जीन हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं. अब आप देखेंगे एक सबसे पहला एग्जाम्पल जीन थेरेपी का कहाँ देखा गया था? 1990 में 4 साल की एक बच्ची थी, नाम था अशांति डी सिल्वा. इसको एक बीमारी थी SCID, एक डिसऑर्डर था. डिसऑर्डर का मतलब होता है बीमारियों का समूह, कल्मिनेशन ऑफ लॉट मेनी सिम्टम्स, लॉट मेनी डिजीजेस, बहुत सारी बीमारियां जिससे बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, उसे हम सिंड्रोम कहते हैं. तो उस बच्ची को SCID था, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी का फुल फॉर्म है. ऐसा कैसे हो गया था? क्योंकि उस बच्ची के अंदर एक एंजाइम की कमी थी. उस एंजाइम का नाम था एडिनोसिन डी एमिनेज. उस एंजाइम का नाम था एडिनोसिन डी एमिनेज, ADA. डेफिशिएंसी थी, कमी थी उस एंजाइम की. क्या जरूरत है इस एंजाइम की? ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इम्यून सिस्टम को फंक्शनल बनाने के लिए. क्योंकि ये एंजाइम करता क्या है? ये एंजाइम हमारे अंदर जो डीऑक्सी एडिनोसिन या डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो बनते हैं, जब DNA ब्रेक होता है उसके बाद जब बनते हैं, तो उसे रिमूव करता है. कैसे रिमूव करता है? क्योंकि ये डीऑक्सी एडिनोसिन और उनके डेरिवेटिव्स टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, उन्हें कन्वर्ट कर देता है नॉन टॉक्सिक केमिकल में. नॉन टॉक्सिक केमिकल यानी डीऑक्सी इनोसिन. ये काम ADA एंजाइम का है. लेकिन ऐसा अगर ना हो तो क्या हो, उसे भी देख लेते हैं. नेक्स्ट पेज में देखिए. सबसे पहले आप ये देखेंगे ये जीन होती कहाँ पर है, कहाँ पे लोकेटेड होती है और कौन से म्यूटेशन से ये बीमारी इस बच्चे को हो गई, ये डिसऑर्डर उस बच्चे को हो गया.
तो सबसे पहले जो एडीए एंजाइम है उसे एक जीन है एडीए जीन, वो कोड करती है और ये जीन क्रोमोसोम नंबर 20 पे पाया जाता है, यानी ये ऑटोसोमल जीन है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे पाया जाता है ह्यूमन के। एडीए एंजाइम की डेफिशिएंसी से अभी मैंने बताया एक डिसऑर्डर हुआ बच्चे को, SCID, इसका फुल फॉर्म है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और अभी मैंने सिंड्रोम का मतलब बताया, कल्मिनेशन ऑफ लॉट मेनी डिजीजेस, लॉट मेनी सिम्टम्स, खूब सारे बीमारियों का समूह, और खूब सारी बीमारियां बच्चे को होंगी तो खूब सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे और बच्चा सरवाइव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इस बच्चे के अंदर एक्वायर्ड इम्यून सेल्स बन ही नहीं रहे हैं। लिम्फोसाइट्स हैं बच्चे के अंदर, लेकिन टी सेल्स, बी सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स में वो डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहे। तो इससे क्या होगा, ये जो एंजाइम है इसकी कमी की वजह से हमारे अंदर टॉक्सिक केमिकल इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, जैसे डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये टॉक्सिक केमिकल्स जो होते हैं ये जनरली एडीए हमारे बॉडी से बाहर निकाल देता है, उन्हें नॉन टॉक्सिक केमिकल में कन्वर्ट कर। लेकिन क्योंकि इस एंजाइम की कमी हो गई है तो ये हार्मफुल केमिकल्स हमारी बॉडी में इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे और इससे हमें SCID हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो लिम्फोसाइट्स हैं वो डिफरेंशिएट नहीं हो पाएंगे, वो मैच्योर नहीं हो पाएंगे, वो फंक्शनल नहीं हो पाएंगे, वो फंक्शन नहीं कर पाएंगे, हमें इम्यूनिटी नहीं दे पाएंगे, हमें बीमारी से लड़ने की क्षमता नहीं दे पाएंगे। सो द SCID पेशेंट में क्या नहीं होंगे, टी लिम्फोसाइट्स नहीं होंगे, बी लिम्फोसाइट्स नहीं बनेंगे, नेचुरल किलर सेल्स नहीं बनेंगे। इससे बच्चे में इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो जाएगी कि थोड़े से इन्फेक्शन से ही, थोड़े ही पैथोजन के एंट्री होने से ही उसको बीमारियां लगने लगेंगी, धीरे धीरे बहुत सारी बीमारियां लगेंगी और वो बच्चे की डेथ भी हो सकती है। कैसे बचाया जाए उस बच्चे को, क्या इसका इलाज है? सो ये देखिए, व्हाट काइंड ऑफ म्यूटेशन रिजल्टेड इन डिसऑर्डर। ठीक है, तो पहले तो आप देखेंगे क्या म्यूटेशन हुआ था, डिलीशन हो गया था जीन में। कौन से जीन में? एडिनोसिन डीएमिनेज, जो एंजाइम बना रही थी एडी एंजाइम, उसमें डिलीशन हो गया। डिलीशन आपने पढ़ा हुआ है, अगर आपने एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ी है जेनेटिक्स, तो उसमें आपने पढ़ा था राम हैज, एग्जाम्पल से समझाया था, राम हैज रेड कैट, रेड कैट। तो यहाँ पे अगर हम आर को यहाँ से डिलीट कर दें तो आप देखिए एक इंफॉर्मेशन थी जीन के पास, राम हैज रेड कैट, लेकिन क्या हो गया, राम हैज, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट इज द मैसेज गोइंग ऑन, तो रॉन्ग मैसेज मिला जिससे जीन में म्यूटेशन हो गया। और कैसा म्यूटेशन? डिलीशन। यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस डिलीट हो गए जिससे कि ये डिसऑर्डर देखने को बच्चे के अंदर मिला ना। ये कैसी बीमारी है? ये ऑटोसोमल है, यानी क्रोमोसोम नंबर 20 पे इसकी जीन पाई जाती है। अगर जीन रिसेसिव हो जाए, दोनों पेरेंट्स से रिसेसिव आपको एलील मिल जाए, तो ये बीमारी होती है। और ये मोनोजेनिक डिसऑर्डर है, एक ही जीन इसे कंट्रोल करती है। प्यूरिन मेटाबॉलिज्म यहाँ डिस्टर्ब होता है। प्यूरिन आप जानते हैं एडिनोसिन एक प्यूरिन है, उसका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर देखने को मिलता है इस बीमारी में। अब ये बीमारी बच्चे के अंदर आई कैसे, डिसऑर्डर बच्चे के अंदर आया कैसे? यानी उसके दोनों पेरेंट्स कैरियर रहे होंगे, उनके पास छुपी हुई रिसेसिव जीन होगी, और जब ये पेरेंट्स, आप देख पा रहे हो, गैमीट्स बनेंगे इनके, और आप जानते हो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है, एलील पेयर सेपरेट होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं, और फिर पेयर कंडीशन वापस आ जाती है जब फर्टिलाइज होते हैं। अब देखिए फर्टिलाइजेशन के बाद वापस पेयरिंग हो गई, ये देखिए नॉर्मल होगा, ये चाइल्ड इस कपल का नॉर्मल होगा अगर पेरेंट्स कैरियर है। ये भी नॉर्मल होगा क्योंकि एक डोमिनेंट जीन काफी है नॉर्मल एडीए, फंक्शनल एडीए एंजाइम बनाने के लिए, ये भी नॉर्मल है। लेकिन जब दो रिसेसिव जीन एक साथ आती हैं तो ये केस हो जाएगा किसका? एडीए डेफिशिएंसी, क्योंकि रिसेसिव जीन एडीए एंजाइम नहीं बना सकते, नहीं कोड कर सकते, और एडीए एंजाइम की कमी से
लिम्फोसाइट्स मैच्योर नहीं हो पाएंगे, डिफरेंशिएट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि प्यूरिन जो है, जो एडिनोसिन है, उसका टॉक्सिक लेवल बढ़ जाएगा, वो मेटाबोलाइज नहीं होगा, और टॉक्सिक लेवल बढ़ने की वजह से लिम्फोसाइट्स जो है वो मैच्योर नहीं हो पाएंगे, वो डिफरेंशिएट नहीं हो पाएंगे, बच्चे को एक्वायर्ड इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, और इम्यूनिटी ना मिलने की वजह से बच्चे में बीमारियां लगने लगेंगी, बच्चा बीमारियों से अपने आप को बचा नहीं पाएगा और उसकी डेथ हो सकती है ना। कैसे इस बीमारी का इलाज किया जाए ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ लेट अस सी। दो मेथड्स हैं इस बीमारी को ठीक करने के लिए, एक है कन्वेंशनल मेथड और दूसरा है जीन थेरेपी। कन्वेंशनल मेथड में हम क्या कर सकते हैं, उस बच्चे का पूरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, जो बहुत महंगा भी पड़ता है। इसमें क्या करना है, बच्चे का जो बीमारी वाला बोन मैरो है, जिसमें डिजीज्ड जिसमें म्यूटेटेड लिम्फोसाइट्स हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं, उसको हेल्दी ब्लड फॉर्मिंग स्टेम सेल्स दे सकते हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? परमानेंट क्योर नहीं है, पॉसिबल तो है लेकिन परमानेंट क्योर नहीं, क्योंकि स्टेम सेल्स यूज अप कर लेगा बच्चा, यूज हो जाएंगे, फिर बार बार उस बच्चे को बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा। ये एक परमानेंट क्योर नहीं है। दूसरा एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसमें हम फंक्शनल एडीए बच्चे को देंगे इंजेक्शन से, एंजाइम उसको इंजेक्शन से देंगे तो बार बार देना पड़ेगा क्योंकि वो भी यूज अप हो जाएगी, तो ये भी एक परमानेंट क्योर नहीं है। फिर हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है, वो है जीन थेरेपी। अब जीन थेरेपी में हमने करना क्या है ये देख लेते हैं, क्या क्या स्टेप्स होंगे जीन थेरेपी के। लेट अस सी। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस बच्चे के ब्लड से हमें लिम्फोसाइट्स को आइसोलेट करना पड़ेगा और उससे बॉडी से बाहर उसके लिम्फोसाइट्स को एक पैट्री डिश में कल्चर करना पड़ेगा। ये पैट्री डिश है, इसमें इसके लिम्फोसाइट्स को हमने कल्चर कर। उसके बाद हम क्या लेंगे, एक रेट्रोवायरस लेंगे। रेट्रोवायरस आप जानते हैं, उसके पास आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके पास उसके हार्मफुल जीन्स होते हैं। सबसे पहले हमें उसके हार्मफुल जीन को निकाल के बाहर फेंकना है। ठीक है, हमारे पास ऐसे ऐसे टूल्स हैं, हमने इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ा है, ऐसे टूल्स हैं जो कट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, हार्मफुल जीन को हम निकाल के बाहर फेंक सकते हैं, यूजफुल जीन को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास टूल्स हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस के नाम पर, मॉलिक्यूलर सीजर्स जिन्हें हम कहते हैं। और चिपका किससे सकते हैं, ग्लू किससे कर सकते हैं, डीएनए लाइगेज। तो ये एक मेथड है, हमने पढ़ा कलेक्शन ऑफ मेथड्स, तो उसमें ये भी एक मेथड है कि हम सबसे पहले रेट्रोवायरसेस क्योंकि हार्मफुल होते हैं, उसकी जो हार्मफुल जीन्स है उसे निकाल के बाहर फेंक देंगे या उसको इनएक्टिव कर देंगे, समहाउ उसकी पैकेजिंग इस तरह से कर देंगे कि वो इनएक्टिव हो जाए, वो एक्सप्रेस ना करे। तो ये अलग अलग मेथड्स किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने जीन को रिमूव कर दिया, तो इससे ये जो पैथोजन हो गया ये डिसआर्म्ड हो गया, यानी इसके हथियार हमने फेंक दिए, इसके जो हार्मफुल जीन्स थी वो फेंक दी, लेकिन इन्फेक्शन वाली जीन को रहने देना है जो इन्फेक्शन करेगी, क्योंकि इन्फेक्शन वाली जीन रिमूव कर देंगे तो लिम्फोसाइट्स में इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे जीन्स। तो आपने देखा कि अब हम क्या करेंगे, एक एडीए जीन लेंगे फंक्शनल जीन और उसको हम रेट्रोवायरस के जीन में इंट्रोड्यूस कर देंगे। अब इस रेट्रोवायरस को हम अलाउ करेंगे कि वो लिम्फोसाइट्स में क्या करे, इन्फेक्शन करे। और आपको पता है कि जब हम रेट्रोवायरसेस को अलाउ करते हैं टू इन्फेक्ट, तो रेट्रोवायरसेस या कोई भी वायरस उसका सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ही इंट्रोड्यूस होता है सेल। और क्योंकि यहाँ रेट्रोवायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए है और उस आरएनए के पास डिजायर्ड जीन भी है, एडीए जीन भी है, यहाँ पे ये एडीए जीन भी है। अब जैसे ही ये आपके लिम्फोसाइट्स में एंटर हुआ ये आरएनए, तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले अपना खुद का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाएगा। कैसे बनाएगा, जैसे मान लीजिए ये वायरस है, इसका वायरस का आरएनए इंट्रोड्यूस हो गया, अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए ये बन गया। अब इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में भी क्या है, आपकी डिजायर जीन है, राइट। मान लीजिए ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि अगर यहाँ ए है तो यहाँ टी होगा, यहाँ अगर यू है तो यहाँ क्या होगा,
ए होगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन गया। सो एडीए जीन का भी कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ बन गया, तो यानी एडीए जीन आपकी डीएनए में आ गए। अब ये डीएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड होगा बाय यूजिंग डीएनए पॉलीमरेज ऑफ द होस्ट। होस्ट के अंदर जो डीएनए पॉलीमरेज है उसे इस्तेमाल करके ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा और लिम्फोसाइट्स के न्यूक्लियस में ये डीएनए, ये न्यूक्लियस है लिम्फोसाइट का, उसका खुद का डीएनए है लिम्फोसाइट का, और उसमें ये आपका डीएनए जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है जिसमें एडीए जीन भी है, कौन सी जीन है, एडीए जीन, वो भी एंटर कर जाए। क्योंकि इस लिम्फोसाइट में एडीए जीन नॉन फंक्शनल थी, आपने एक फंक्शनल जीन को यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इस तरह से इस लिम्फोसाइट में क्योंकि आपकी फंक्शनल एडीए जीन पहुंच चुकी है, अब ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट हो गया। अब ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट हो गया और अब इसकी मल्टीपल कॉपीज आप बनवा लीजिए, ठीक है, और कुछ कॉपीज इसकी पेशेंट को दे दीजिए जिससे कि उसके अंदर एडीए जीन पहुंच जाए फंक्शनल, और जब एडीए जीन उस पेशेंट के अंदर चली जाएगी तो एडीए एंजाइम बनेगी। एडीए एंजाइम जो टॉक्सिक लेवल है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडिनोसिन का, उसे कम कर देगा और इस तरह से उसके लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट करेंगे टी सेल्स और बी सेल्स में। कुछ महीनों के लिए बच्चे को क्या मिल जाएगी, इम्यूनिटी, लेकिन ये भी परमानेंट क्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो लिम्फोसाइट्स आपने भेजे हैं वो इमॉर्टल नहीं है, वो अजर अमर नहीं है। कोई भी सेल हमारे अंदर अजर अमर नहीं है, उनकी अपनी एक लाइफ स्पैन होती है। लिम्फोसाइट्स की भी अपनी लाइफ स्पैन होगी, वो उनका एक एज है, उसके बाद उनकी डेथ हो जाएगी। तो इसलिए आपको बार बार लिम्फोसाइट्स उस पेशेंट के अंदर भेजने पड़ेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, आपने ऑलरेडी क्लोन्स बना रखे हैं, आप उस बच्चे को जिंदा रख सकते हो। उसको बार बार महीने महीने में या 2 महीने बाद आप उसको जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स उसके बॉडी में पहुंचा सकते हैं। तो ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, आप देख सकते हो वही सारे स्टेप्स हैं। ये पेशेंट है जो SCID जिसको है, इसके हमने लिम्फोसाइट्स पेक्टि डिश में ले लिए, ये लिम्फोसाइट्स आप देख रहे हैं। फिर हमने डिसार्म्ड रेट्रोवायरस लिया, उसके हार्मफुल जीन को निकाल के बाहर फेंक दिया, उसमें एडीए जीन, हमने फंक्शनल एडीए जीन इंट्रोड्यूस कर दी। अब क्या होगा, ये एडीए जीन जो है अलोंग विद वायरस आरएनए, वायरस के आरएनए के साथ एडीए जीन भी लिम्फोसाइट में एंटर हो जाएगी। अब ये आरएनए क्या करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाएगा। इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में आपकी एडीए जीन भी है। ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए अभी सिंगल स्ट्रैंडेड है, आपके डीएनए पॉलीमरेज यूज करके ये डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा, यानी लिम्फोसाइट्स के डीएनए पॉलीमरेज यूज करके। आप जानते हो वायरसेस का अपना खुद का कोई मैकेनिज्म नहीं होता, अपनी खुद की कोई मशीनरी नहीं होती है, वो होस्ट की मशीनरी को इस्तेमाल करके नई चीजें बनाता है। सो अब ये cDNA कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जिसमें आपकी डिजायर्ड जीन है, फंक्शनल एडीए जीन है, ये आपके लिम्फोसाइट के न्यूक्लियस में एंटर हो जाएगी। न्यूक्लियस में उसका जीनोम है, डीएनए है, डीएनए में जाके ये जीन बैठ जाएगी। यानी समहाउ आपने लिम्फोसाइट के डीएनए में एडीए जीन पहुंचा दी, किसकी हेल्प से, रेट्रोवायरस की हेल्प से। तो अब ये जो आपके लिम्फोसाइट्स हैं ये हो गए आपके जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट। इनमें क्योंकि आपकी डिजायर्ड एडीए जीन पहुंच गई, फंक्शनल एडीए जीन पहुंच गई। अब इन लिम्फोसाइट्स को आप क्लोन कर लीजिए, आप देखिए कितने सारे क्लोन्स बना लिए, और इनमें से कुछ को आप जो है बच्चे की बॉडी में पहुंचा दीजिए। जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट वापस बच्चे की बॉडी में भेज दीजिए, और ये लिम्फोसाइट्स के पास क्योंकि फंक्शनल एडीए जीन है तो वो क्या करेगी, एडीए एंजाइम बनाएगी, और एडीए एंजाइम टॉक्सिक केमिकल्स को रिमूव करेगी जिससे लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट कर सके टी सेल्स में, बी सेल्स में, नेचुरल किलर सेल्स में, जिससे कि बच्चे को इम्यूनिटी मिल जाए। तो इस तरह से ये जीन थेरेपी के स्टेप्स लिए गए। नाउ कम टू नेक्स्ट, क्या ये परमानेंट क्योर है? नहीं, अभी मैंने आपको बताया ये परमानेंट क्योर नहीं है, क्योंकि लिम्फोसाइट्स या कोई भी सेल हमारे अंदर है वो इमॉर्टल नहीं है, अजर अमर नहीं है, हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। बच्चे
के अंदर हो, एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन है, यूज अप हो जाएंगे, बच्चे को इन्फेक्शन लगेगा, फाइटिंग में मारे जाएंगे, बहुत सारे उसको इम्यूनिटी से बचाएंगे तब मारे जाएंगे, और उनका अपना एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है, वो अपने आप खत्म हो जाएंगे एक टाइम के बाद। तो इसलिए पीरियोडिक मतलब बार बार एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उस बच्चे को जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स जो कि ऑलरेडी हमने क्लोन बनाए हुए हैं, ठीक है, उनको हमको हमको उनको देना पड़ेगा, क्योंकि ये परमानेंट क्योर नहीं है, इसलिए बार बार आपको बच्चों को वो लिम्फोसाइट्स आपको देने पड़ेंगे। कब ये परमानेंट हो सकता है? अगर पता चल जाए एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बीमारी का, अगर हमें पता चल जाए कि जीन म्यूटेशन है एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही, ये कब पता चलेगा? जब पेरेंट्स को पता होगा कि उनके हिस्ट्री में, फैमिली हिस्ट्री में, फैमिली ट्री में बीमारी चली आ रही है और इतना % चांसेस है कि वो आगे उसके बच्चे में हो सकती है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में वो जीन थेरेपी करा सकते हैं। और गैमेटिक स्टेज पे अभी अभी थोड़ा अलाउ नहीं हो रहा है, लेकिन कर सकते हैं आगे चल के अगर परमिशन मिल जाए। तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज पे या गैमेटिक स्टेज पे अगर हम जीन थेरेपी कर दें तो ये परमानेंट क्योर होगा और उनकी फैमिली ट्री से हमेशा के लिए वो डिसऑर्डर गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब तक कि फिर से कोई म्यूटेशन ना हो तब तक वो बीमारी उनकी फैमिली ट्री में नजर नहीं आने वाली। अगर हम गैमेटिक लेवल पे या एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये जीन थेरेपी करते हैं, करेक्ट जीन को इंट्रोड्यूस करा देते हैं एम्ब्रियोनिक सेल के अंदर, तब ये परमानेंट क्योर होगा, नहीं तो ये परमानेंट क्योर नहीं है। Thank you and have a nice day. If you want any other topic to know, let me know so that I can make video for you. Thank you and have a nice day.